गाइस, वेलकम बैक। आज हम डेल लैपटॉप को रिपेयर करना देखते हैं कि अगर विंडोज़ करप्ट हो जाती है तो हम उसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं। मेरे पास डेल इंस्पायरन 1.4 जो है वो 3000 सीरीज़ का है और ये i3 7th जनरेशन के साथ में है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी रिपेयर अटैम्प्ट्स चल रहे हैं, कई बार इसमें किए गए हैं, बट अभी देखते हैं इसे कैसे फुल कर सकते हैं और सक्सेस कर सकते हैं। बट इसमें आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो आपका डाटा है वो किसी दूसरी हार्ड ड्राइव में ले लिया जाए। अदरवाइज़ अगर आप डाटा नहीं निकालते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको यहाँ पर एडवांस ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। कंटिन्यू टू विंडोज़ 10, अगर आपकी विंडोज़ वर्क कर रही है तो आप विंडोज़ 10 के साथ में वर्क कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ट्रबल शूट पर क्लिक करना है। आप जैसे ही ट्रबल शूट में क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। रीसेट टू फैक्ट्री, यहाँ पर 2 ऑप्शन और मिल जाते हैं अगर आप फैक्ट्री रीसेट में करते हैं। तो हेयर आर 2 ऑप्शन लाइक कीप माई फाइल्स एंड रिमूव एवरीथिंग। If you want, like your files, your data will be saved on your computer, then go with it. Otherwise, remove everything, like remove all personal files, all the apps, all the things are gone. If you choose this is the factory this is the factory default image, like it's a new computer as you like brand new, all the things. There's so much other options like uninstall, update, system restore. If you want like just restore your system, then click on system restore, and otherwise you just back and reset the PC, remove everything. If you select this, then here's a 2 more options, cloud download and local install. So I don't have any other softwares, anything on the cloud, so I'm going with local reinstall. Then it's starting, like resetting the PC, and here's a 2 more options, reset only drive or Windows installed or all drives. So I'm going with this, and fully clean and dry because I need to reset my PC, all the apps. After that, here's the option reset the PC, so I'm just click on reset. So you can check all the things here, like reset the PC, what is the delete from your SSD, it means your hard drive. So resetting will be remove your personal files, accounts, all the things, remove any changes made setting, reinstall Windows from device. Okay, so I am just click on reset and it's starting to resetting the device, resetting the computer. After that,